Hello students, hello everyone. In this video, I'm going to discuss the topic file handling. Okay, and this topic is for class 11 students who have opted computer science in ICSE board. Okay, so this topic is for class 11 students of ICSE board. So without wasting your and my time, let's start this topic. Okay, so here we go. So now I'm going to discuss this topic, that is file handling. Okay, so let me discuss basic things, basic concept. Let me tell you, this is very conceptual things. You must know the basic concept, then you will be able to write the program for this file handling. Okay, so what is the basic concept of this? You have executed many programs before this. Many programs we have already executed. You have typed in the computer, you have compiled, you have executed. So when you execute a program, what happens? You enter some data as input, and after processing you get some data as output. So whatever data you have entered and whatever data you are getting as output, that everything is temporary, nothing is stored permanently. When your program will be closed, that data will be destroyed. Nothing is stored permanently means if you want to get that data afterwards, you cannot get it. Okay, whatever you have entered as input and whatever you're getting as output, nothing is stored to anywhere. That everything is what? Temporary. That everything is stored into a primary memory, that is in RAM. And whenever if when you close your program, that data will be destroyed, and like this. So nothing is permanent uh, until uh, until the program is running. When the program will be closed, that data will be destroyed. So we have done such programming. Here what we are going to do, we are going to store the data into a file. Okay, means we'll store the data into the file, and that file we can access, you can use afterwards. The data which we have stored into the file, we can use afterwards. In simple language, I'm going to tell you, I'm not going to use so much technical words. Simply I'm telling you, through the programming we are going to create the files, and the files will store the data, and through the programming we will read the data which is written in the file. Simple basic concept is this. In file handling we do this thing. Okay, so file handling means, now through the programming we will create the file. You have created many, very well how to create a file using notepad, using MS Word. So you have created a file also, and whatever you type in the file, that is stored permanently. If you want to use it afterwards, you can use the data which you have typed or stored into the file. Okay, so here through programming we are going to create that files. We have created the files using notepad, wordpad, MS Word. So here through Java programming we are going to create such files. We will store the data into the file and will read the data from the file. Okay, these things we are going to do in this file handling. Okay, means through file handling, this topic is related to what? Related to creating a file, and means writing the data into the file and reading the data from the file. These two operations we are going to perform on the file. मीन्स प्रोग्रामिंग के थ्रू हम फाइल क्रिएट करेंगे, उस फाइल में कुछ टाइप करेंगे, फिर उस फाइल से जो टाइप्ड ऑलरेडी टाइप्ड है उसको हम रीड करेंगे. This process we are going to perform in this file handling topic. Okay, so I hope the things are clear what I want to explain you. So let's see here file handling. So before file handling, let me tell you, before starting the program, these things are there, the basic things are there which you must know, that must be clear. Okay, so first of all, operations on file. Okay, operations on file. There are two operations on file: file input and file output. Okay, file input and file output. Okay, so there are file input means what? Input is taken by program. Don't leave this topic, don't think about this file input this time. Just I'm telling you the normal procedure, what happens in the general programming. Input is taken by the program. When you type, when you enter any value from the keyboard, means when you give input to the program, input is taken by whom? Program. Program takes input. Input लेने का काम किसका है? प्रोग्राम का. ओके, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट देने का काम किसका है? वो भी प्रोग्राम का ही. ठीक है, सो मीन्स इनपुट इज टेकन बाय प्रोग्राम
and after processing, output is also produced by the program. Okay, so in taking input, giving output, this is the work of program. Okay, so here file input means what? Generally, this confusion may be created. I have written in the bracket. File input means reading from file. Reading from file. Okay, so before this process, file input output, let me tell you let me tell you what is the process of standard input output. Okay, what happens in standard input output means generally what we have done before this, the input output process which we have done before this, that are general standard input output process. Okay, so the process is what? uh, Keyboard is here, means keyboard or any input device, keyboard. Okay, then in between there is a program is there, and then this is input device, right? Input device. Then here we have monitor. Generally we use monitor as a output device. This is output device. So what happens? Standard input output process is what? Program takes the input from the keyboard. Generally this we have done. Program takes the input from the keyboard. Okay, and after processing, it produces the output, and that it gives to the monitor, that is to output device. This is normal standard input output process. The program is taking input and program is giving output. दोनों काम प्रोग्राम ही कर रहा है. इनपुट लेने का काम प्रोग्राम का है, आउटपुट देने का काम प्रोग्राम का ही होता है. इनपुट डिवाइस से इनपुट डेटा लेना, प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस को रिजल्ट देना. Okay, both work is of program. Please try to understand. Okay, so this is the process of input, standard input and output. Okay, so in file input output, what happens? Let me show you. File input means what? File input means, here it is standard input which I have explained. Okay, file input means the input will be taken from the file. Who will take the input? Program. I mean, this time the input will not be taken from the keyboard. The input will be taken from the file. File input, I am explaining the file input process. This process I am explaining. What is this? File input. I am explaining file input process. Means input, the program will take the input from the file. This is program. The means in file input process, in file input program, the program will take input, means it will fetch the data, it will take the data from the file. मीन्स इनपुट ये कहाँ से लेगा? फाइल से लेगा. फाइल में जो भी डेटा वहां से वो डेटा फेच करेगा प्रोग्राम. तो फाइल इनपुट, दिस इज कॉल्ड फाइल इनपुट. मीन्स प्रोग्राम इज टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द फाइल. फाइल इनपुट मीन्स रीडिंग फ्रॉम द फाइल. मीन्स व्हाट? रीडिंग फ्रॉम द फाइल. And after fetching the data, it will display on the monitor so that we can read it, what is written in that file. This is called file input process. Okay, here we are not taking input from the keyboard, we are taking input from the file. Means the program is taking input from the file, and after processing, it is producing output on the device, output device. This is what? File input. It was what? File input. Okay, then let me show you. Now file output. What is the meaning of file output? File output means, you can see, writing to the file. Means output, general process is what? What is the standard input output process? We take input from the keyboard and we send the output to the monitor. This is the normal process, standard input output. Here I am talking about file output. So the work of giving output is of what? Program. Program का काम input लेना है, program का ही काम output देना है. So means this time in case of file output, the program will not send the output to the monitor, it will send the output to the file. मतलब output इस बार ये monitor को नहीं देगा, file को देगा. Means in file output what will happen? The data will be taken from the keyboard. Keyboard से data मिलेगा. And that will go to program. Input हम करेंगे, हमको we are going to write on the file. फाइल में हम डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं, मतलब फाइल में टाइप करने जा रहे हैं. दैट इज कॉल्ड फाइल आउटपुट. सो कीबोर्ड से हम इनपुट लेंगे.
मतलब हम टाइप करेंगे कीबोर्ड से जो भी डेटा, उसको प्रोग्राम लेगा और उसको कहाँ राइट करेगा, उसका आउटपुट कहाँ देगा, मॉनिटर पे नहीं, फाइल पे। आउटपुट कहाँ जाएगा, फाइल पे। दिस इज व्हाट, फाइल आउटपुट प्रोसेस। फाइल आउटपुट मीन्स राइटिंग टू द फाइल, मीन्स इनपुट लेने का काम प्रोग्राम का है, आउटपुट देने का भी काम प्रोग्राम का ही है। तो कीबोर्ड से इनपुट लेगा और आउटपुट कहाँ देगा, इस पर डिवाइस पे नहीं, मॉनिटर मॉनिटर पे या आउटपुट डिवाइस पे नहीं, आउटपुट कहाँ देगा, फाइल पे। और फाइल इनपुट में क्या हो रहा है, फाइल इनपुट में क्या हो रहा है, फाइल इनपुट में कीबोर्ड प्रोग्राम विल टेक डेटा from program will take data from file and will produce the output on the monitor। ये फाइल इनपुट में हो। फाइल आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट फाइल को जाएगा, इनपुट कहाँ से आएगा, कीबोर्ड से, मतलब कीबोर्ड से टाइप करेंगे, जो भी हम कीबोर्ड से इनपुट देंगे वो फाइल पे जाएगा एज आउटपुट। Okay, I hope the things which I want to explain is clear to everyone. If any doubt, you can ask. Still, you can ask to the comment section. You have option for that. So this is the process of file input and output, and these two operations we are going to perform on what, files, file input and file output. Okay, file input means reading from the file. Just listen carefully. This is little bit confusing. Okay, generally please, if the concept is here कि इनपुट लेने का काम और आउटपुट देने का काम, दोनों काम प्रोग्राम का होता है, फाइल इनपुट आउटपुट नहीं लेता। इनपुट लेने का काम किसका है, प्रोग्राम का, और आउटपुट देने का काम किसका है, प्रोग्राम का है। तो प्लीज कीप इन माइंड, दोनों काम प्रोग्राम ही करता है। ओके, so this is about basic operations which are going to perform on file। Okay, now coming to the types of file, before this I have to explain one concept, that is stream। stream हमको बताना पड़ेगा थोड़ा सा, in stream I have to tell you, explain you, leave it, I will explain stream afterward। Before that, let me tell you, here we are going to discuss two types of files। there are two types of files generally, text file और character file, you can say। टेक्स्ट फाइल होती है डॉट टीएक्सटी फाइल, नोटपैड में जो हम लोग फाइल बनाते हैं वैसे ही फाइल बनाएंगे, टेक्स्ट और कैरेक्टर फाइल। और सेकंड है, तो टेक्स्ट और कैरेक्टर फाइल आर ह्यूमन रीडेबल, यू कैन रीड इट। जो भी कैरेक्टर्स, जो भी स्टैंडर्ड इनकोडिंग स्कीम होगी, जैसे आस्की हुआ इनकोडिंग या यूनिकोड हुआ, जो भी कैरेक्टर इनकोडिंग होगी उसमें, मतलब दैट कैन बी रेड बाय द प्रोग्रामर्स, ह्यूमन कैन रीड इट। ओके, another type is, this is 1 2, don't be confused with the number, this is 1 and 2। Okay, text or character files, normal files generally you have created through notepad, such files will create। And second is binary file। binary file means here the data will be stored into machine readable language, means that cannot be read by the human beings, machine readable language hoti hai। If you will try to open such files, you cannot read it। I will show you that file also, I will create and I will show you। Okay, so here there are two types of files, text files and binary file। it stores character as per the specific character encoding scheme in case of Java Unicode। ये character as per the specific character encoding scheme, कई सारे की, there are many character encoding scheme, one of you know very well ASCII code, and another, and in case of Java it is universal code, Unicode। Okay, and second is binary file, means it stores the data in machine readable form। machine readable, sometimes it is required to store the data in machine readable form for the security purpose, means that file only can only be read by the program only, human being cannot read it directly। if any person trying to open that file, that person cannot read the data which is written in the binary file, that only, that file can only be read by the प्रोग्राम के थ्रू इसको रीड किया जा सकता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो सिक्योरिटी पर्पज से बाइनरी फाइल बनाई जाती है, और जनरली ह्यूमन रीडेबल फाइल बनाई जाती है जो कि टेक्स्ट फाइल होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल, binary file and text file, and the differences I have written here। Okay, now these are the things, इस पे तुमको बाद में आना है। Now listen, so these are the types of the files। now I'm going to discuss one more basic concept in case of file handling, that is concept of stream। Okay, stream, STREM, stream। Okay, there are two types of stream, input stream and output stream। Okay, so first of all let me explain standard input output। Okay, what happens actually,
in standard input output, see the actually complete process is what? Keyboard. Here we have keyboard, that is input device. Okay, keyboard. So we enter the key data from the keyboard. Okay, so it does not go directly to the program. जो भी हम डेटा कीबोर्ड से एंटर करते हैं डायरेक्टली प्रोग्राम को नहीं जाता है. प्रोग्राम और कीबोर्ड के बीच में एक आता है स्ट्रीम. स्ट्रीम आता है. उस स्ट्रीम को यहाँ पे कीबोर्ड से जो डेटा जाता है उसको जो उसके लिए जो स्ट्रीम क्रिएट होती है उसको कहते हैं इनपुट स्ट्रीम, या यू कैन से स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम. स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम. Okay, so means whatever we enter through the keyboard, that goes to input stream. In case of keyboard, the input stream is called standard input stream, and program fetch the data from this input stream, not from directly from the keyboard. Okay, it will not take the data directly from the keyboard. It's a temporary memory between keyboard and program. Okay, as much data will be required by the program, that much data that program will take from the input stream and will process then further, and so on like this. So means here keyboard, the data entered by the keyboard goes to standard input stream in case of keyboard, and then from here program fetch it. Program will take it data from the input stream. After processing, it does not send the data directly to the output device. Before output device, the program send the data to the output stream. In case of keyboard and monitor, that input output stream is called standard output stream. Standard output stream. Okay, so input stream and output stream, and from output stream the data will be sent to the monitor. Monitor, that is what? Output device. Okay, this is actual process. This is this I have shown standard input output process. Standard input output process. In this process, the data entered by the keyboard will go to input stream, that is called standard input stream, and from this standard input stream program will take the data. Okay, then after processing, the output will be sent to the, not directly to the monitor, not directly to the output device. It will be sent to the output stream, that is standard output stream, and from that monitor will, and from that data will be sent to the monitor. Means प्रोग्राम को डायरेक्टली कीबोर्ड से इनपुट नहीं जाता और प्रोग्राम डायरेक्टली आउटपुट मॉनिटर को नहीं देता, बीच में स्ट्रीम आता है. ये इनपुट स्ट्रीम है, ये इनपुट स्ट्रीम है, और ये आउटपुट स्ट्रीम. इनपुट स्ट्रीम कीबोर्ड और प्रोग्राम के बीच का एक टेम्पोररी डेटा, टेम्पोररी मेमोरी स्पेस है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है और प्रोग्राम वहाँ से अपने नीड के अकॉर्डिंग फेच करता है. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर. So this is the process of standard input output. Okay, in case of file handling, in case of file input and file output, let me explain file input first. File input means reading data from file. As you know, I have explained already. File input means reading data from file. Input will be taken from input will be taken from file. Okay, so means here we have file. So from file, the data will be fetched and will not go directly to the program. It will be sent to the stream, input stream, and here this input stream is called file input stream. Called file input stream. And from here, the program will fetch the data. Program will fetch the data. Program will fetch the data from the file input stream. In case of file input, the data will be taken from file, and it will go to file input stream. Here, in case of keyboard, it is called standard input stream. And program will fetch the data from the file input stream, and it will produce the output on monitor. So before that, standard input stream, because data will be sent to the monitor, so it will go to standard input stream, and from there monitor. From there data will be sent to the monitor. Means we are reading the data from the file, और फाइल से डेटा रीड होगा तो प्रोग्राम उसको फिर आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम में डालेगा, सेंड करेगा, और वहां से डेटा
मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइल का जो कंटेंट हमें दिख जाएगा, हम पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज द कंटेंट, व्हाट आर द कंटेंट्स इन द फाइल. ओके, दिस इज व्हाट मॉनिटर. So this is file input process. Okay. Then second, in case of file output, what happens? File output means giving output to the file. Output कहाँ देना है? इस बार file पे देना है, means writing to the file. Writing data to the file. Writing data to the file means यहाँ पे. So in case of file output, what happens? Data will be taken from the keyboard. हमें keyboard से type करेंगे, वही data हम file में store करेंगे. तो keyboard will be, so data will be taken means input will be taken from keyboard. And as I told, it will be sent to the standard input device. The data sent by the keyboard will be stored into standard input stream. And from here, program will fetch the data. This program will take the data from here, and then it will be sent to the keyboard से जो हमने type किया, the things, the input which you have given to the keyboard, that will be sent to the standard input stream. Program will take from there. And after processing, the output will be given to file output. So output will be given to file. Okay, file पे जाएगा, मतलब यहाँ पे file है हमारी, तो file directly file पे नहीं जाएगा. Before that we have to create, there will be file output string. There will be what? File output string, and that will be sent to file directly. That will be sent to file. अब वो चीज डेटा फाइल पे चला जाएगा, मतलब कीबोर्ड से इनपुट लिया, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम में गया, फिर यहाँ से प्रोग्राम में गया, प्रोग्राम ने उसको आउटपुट कहाँ दिया, इस बार फाइल आउटपुट स्ट्रीम में सेंड किया, क्योंकि और वो डेटा फिर कहाँ जाएगा, आउटपुट कहाँ जाएगा, फाइल पे जाएगा. डायरेक्ट फाइल पे नहीं जा रहा है, बीच में क्या आ रहा है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम आ रहा है. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर. So if any doubt, you can ask through the comment section. Okay, so these are the basic things you must know. One more topic I am going to tell, that is buffering. Buffering will also be used in this programming. So let me tell you what is buffering. Okay, this is also the basic, this concept also you must know, because in case of character file reading and writing, character file, the app taught, there are two types of files, character file and binary file. So in case of character file or text file, we require buffering also, buffer also. Okay, so buffering means, buffer is a temporary memory that store data. Okay, यहाँ पे क्या होगा कि जब फाइल इनपुट और आउटपुट होगा, तो इनपुट स्ट्रीम और प्रोग्राम के बीच में यहाँ पे बफर आएगा, इनपुट बफर. और फाइल आउटपुट केस में यहाँ पे प्रोग्राम और आउटपुट स्ट्रीम के बीच में यहाँ पे बफर आएगा, बफर यहाँ पे आएगा, दैट इज आउटपुट बफर. ओके, मतलब यहाँ पे इनपुट बफर आएगा, मतलब फाइल स्ट्रीम और प्रोग्राम के बीच में, और यहाँ पे फाइल आउटपुट और प्रोग्राम के बीच में यहाँ पे आउटपुट बफर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आउटपुट बफर आएगा. ठीक है, तो इनपुट स्ट्रीम से और यहाँ आउटपुट स्ट्रीम से डेटा लेने का आउटपुट बफर यहाँ पे आएगा. ओके, सो मतलब होता क्या है, दिस लेट मी एक्सप्लेन, लिसन केयरफुली. An input buffer is used for reading a large chunk of data from a stream. I'm reading from the book, I'm not hiding this, I will explain it. An input buffer is used for reading a large chunk of data from a stream. Okay, means इनपुट बफर क्या करता है कि इनपुट स्ट्रीम में, समझ लो यहाँ पे इनपुट बफर की बात करते हैं, पहले इनपुट बफर की मतलब फाइल इनपुट की बात करते हैं. तो यहाँ से क्या करेगा, इनपुट बफर यहाँ से कुछ डेटा रीड करेगा, कुछ अमाउंट रीड करेगा. ये देखो, हमारे छोटे प्रोग्राम में इसका यूज नहीं समझ में आता, जहाँ पे बल्क में डेटा जाता है, बहुत ज्यादा इनपुट होता है, उस केस में बफरिंग की जरूरत पड़ती है. तो जितना मतलब एक अमाउंट चंक ऑफ डेटा बफर में, बफर जो होता है वहां से फेच करता है, इनपुट स्ट्रीम से फेच करेगा. ठीक है, मीन्स इनपुट बफर इज यूज टू फॉर रीडिंग अ लार्ज चंक ऑफ डेटा फ्रॉम अ स्ट्रीम. ओके, द बफर इज देन एक्सेस्ड एज नीडेड, एंड when emptied another chunk of data is read from the stream into the buffer. मतलब यहाँ पे इनपुट बफर कुछ डेटा यहाँ पे एक्सेस करेगा जितना ले सकता है, जब वो यूज हो जाएगा प्रोग्राम में, और जब ये बफर एम्प्टी हो जाएगा, तो फिर वो सेम चंक ऑफ डेटा ये फिर से इनपुट स्ट्रीम से
एक्सेस करेगा, यूज करेगा, फेच करेगा, फिर ये बफर भरेगा, फिर ये प्रोग्राम में यूज होगा, ऐसे प्रोसेस चलता है। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम का ये प्रोसेस है। ठीक है, लाइक दैट आउटपुट स्ट्रीम यहाँ पे आएगा, मतलब फाइल आउटपुट के केस में आउटपुट स्ट्रीम यहाँ पे, आउटपुट बफर यहाँ पे आएगा। ये डेटा आउटपुट बफर क्या करेगा? एन आउटपुट बफर इज यूज टू स्टोर अप डेटा टू बी रिटर्न टू स्ट्रीम। अच्छा, ये आउटपुट बफर यहाँ नहीं, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, सॉरी, आउटपुट बफर यहाँ आएगा। प्रोग्राम से जो डेटा मिलेगा वो आउटपुट बफर में आएगा, और यहाँ से अगर जब अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा तो वो फाइल आउटपुट स्ट्रीम पे राइट हो जाएगा, मतलब सेंड कर दिया जाएगा। तो बीच में ये प्रोग्राम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम के बीच में आउटपुट बफर आएगा। ठीक है, जो भी डेटा प्रोग्राम बल्क ऑफ डेटा आउटपुट देगा वो कहाँ जाएगा? पहले बफर में एक अमाउंट कलेक्ट होगा, दैट कैन बी रिटर्न टू द फाइल आउटपुट। उसका फिर से एक डेटा आएगा, फिर फाइल बफर में आएगा, मीन्स आई एम रीडिंग an output buffer is used to store up data to be written to a stream। ठीक है, once the buffer is full, जैसे बफर फुल होगा, the data is sent to the stream। जैसे बफर फुल होगा, ये बफर जैसे फुल होगा, डेटा किस में चला जाएगा? स्ट्रीम में चला जाएगा, और स्ट्रीम से फाइल में चला जाएगा। once the buffer is full, the data is sent to the stream all at once। पूरा जितना भी डेटा, जैसे बफर जैसे फुल होगा, पूरा डेटा एक ही बार स्ट्रीम में चला जाएगा। एंड द बफर इज एम्प्टीड टू रिसीव द मोर डेटा। फिर से बफर खाली हो जाएगा तो फिर से वो डेटा रिसीव करेगा, एंड सो ऑन, ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। बफरिंग बीच में होती रहती है। बात समझ में आ रही है सबको? आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। देखो, बफरिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग समझा देते हैं। प्रिंटर होता है, प्रिंटर जानते होंगे, प्रिंटर में भी बफरिंग होती है। जैसे तुमने प्रिंट दे दिया तो प्रिंट पे क्लिक करने में सेकंड्स लगते हैं, लेकिन प्रिंटर उसको धीरे धीरे प्रिंट आउट निकालता है ना, तुरंत प्रिंट आउट नहीं निकल जाता। तुम 100 पेज दिए तो 100 पेज एक ही में प्रिंट आउट नहीं निकल जाता। तो पूरा डेटा जो हमने इनपुट दिया वो कहाँ जाकर स्टोर होता है? बफर में स्टोर होता है। अब बफर से प्रिंटर धीरे धीरे वो डेटा फेच करता रहता है और उसको प्रिंट देता जाता है। प्रिंट जितना डेटा चाहिए उसको लिया, फिर प्रिंट किया, लिया, फिर प्रिंट किया। बीच में बफरिंग जरूरी होती है। तो बफरिंग यहाँ पे होगा, और बफरिंग कब होगा? सिर्फ इन कैरेक्टर फाइल, टेक्स्ट फाइल के रीडिंग और राइटिंग प्रोसेस में होगा। फाइल इनपुट आउटपुट, तो टेक्स्ट फाइल का होगा, फाइल इनपुट और आउटपुट, उसमें बफरिंग की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड द बफर आल्सो। ओके, प्लीज कीप इन माइंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, I will try to make the notes of this proper notes. I will make the proper images for that. Okay, so for this video, this much only. In the next video, I will come with the program. Okay, and that program I will explain thoroughly. This basic concept was needed, was required. That's why I was explained before writing the program of file handling. Okay, so please remember this. If any doubt, you can ask through the comment section.